Lovedeep, good afternoon. Bhuttaji, just good afternoon. Karanveer Singh Sidhu, very good afternoon, Bhuttaji. So today's reading passage is very interesting. Gurjot, good afternoon, beta. Okay, let's start with reading passage, namely early occupations around the river Thames of examination date 11th of June 2022. It's very interesting passage actually. Okay, so very important. Exactly. So first of all, let's check the questions. Then we will just read the whole passage, and according to that, you have to just write answers. Okay. So question number 15 to 20. Reading passage 2 has 6 paragraphs. A to F. Choose the correct heading. A to F from the list of headings below. Write the correct number 1 to 9. So आप A भी जरूर पढ़ाएंगे 1 to 9. सब तो पहला है जी a mixture of the language and nationalities. Nationalities the language is the mixture. 2 is the creation of an exclusive identity. Exclusive means very different from others. Like कुछ नवी जो identity है उनको create करना. 3 is the duties involved in the various occupations. So कितने duties ने involved ने various occupations दे विच, right? 4 is unprecedented population density. Unprecedented means never known before, right? ये इतनी ज़्यादा जो population सी है वादी सी कंटा वादी सी population दी. 5 is imports and exports transported by the river. So river is दोबारा import export करना चीज़ां दा. 6 is transporting heavy loads manually. So heavy load नो manually transport करना. Manually means भी लोग ही like उन्होंने जितना उठा के like उन्होंने transport कर दे सी. मतलब इससे vehicle and all the no use नहीं किया जाता सीगा. 7 is temporary work for the large numbers of people. Temporary work means like temporary सबको पता है कि permanent नहीं होता. Temporary काम मिलता है ज़्यादा लोगों को. It is a hazard associated with the riverside work. So कितने खतरे ने जुड़े हुए हैं riverside work के नाल. And 9 is the changing status of the riverside occupations. So riverside occupation दा जो status इधर change हो गया सीगा. जिਵੇਂ ਆਪਾਂ माने change होना मतलब कि like पहला उन्होंने बहुत बढ़िया मनाया जाता सीगा कि बहुत good लोग ने उसके बाद like status change हो गया फिर उन्होंने low class मानने लगे. So that is all about changing status. Clear उत्तर जी? So that is all about the section A, B, C, D, E and F. Okay, उसके बाद question number 21 to 22. Choose 2 letters A to E. Write the correct letters. Which 2 statements are made about work by the river Thames before the 18th century? So पर इसना 18th century तो पहला की गल की जा रही है. So एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना ताकि ये 2 statements ने जो ये कि true सी हैं देना related. Clear? A पढ़ते हैं जी. Goods were transported from the river by cart. So cart गड्डियां नु like use करके जो ये चीज़ां सी हैं उन्हें transport किया जाता सीगा. B is the workforce was very poorly paid. So जो लोग सीगे like जो काम करते सीगे employees सीगे उन्हें बहुत कट salary दी जाती सीगी. C is occupations were specialized. Occupation specialized सीगे means occupations जो सीगे और अलग-अलग लोगों लिए अलग-अलग सीगा भी इधर एक काम particular इधर एक particular काम है क्या. These workers were generally looked down upon. Okay, so workers को ज़्यादा बढ़िया नहीं माने जाता सीगा and ease physical strength was required. So काम करने के लिए physical strength की लोड़ होती सी. Next question number 23-24. Choose 2 letters A to E. Write the correct letters. Which 2 statements are made about life by the river Thames in the early 19th century? So you know I like our early 19th century which create to like getting options here to सीगियाँ. Is the area was very crowded. Area बहुत ज़्यादा crowded सीगा, बहुत ज़्यादा population सीगी. B is there was an absence of crime. So crime बिल्कुल भी नहीं सीगा. C is casual work was in great demand. Casual work जो है सीगा ज़्यादा demand है सीगा. D is several different languages were in use. बहुत सारी different languages सीगी जो use की जाती सीगियाँ. And its inhabitants were known for their friendliness. ते जो like उतने लोग सीगे ना उन्हें like view बहुत ज़्यादा friendly सीगे उधर ही उन्हें जाने जाना सीगा. Okay, then question number 25 to 27. So complete the sentences below. Use no more than 2 words. Either you will use it 2 words or 1 word only. So question number 25. In the 19th century, only a minority of the dock workers received a dash. So 19th century ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ dock workers ਸੀਗੇ, harbor workers ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕੀ. 26.
Cranes were operated manually. Sorry, ਜਿਹੜੇ cranes ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ manually operate ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ because dash created a risk of fire. ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ risk ਸੀਗਾ like ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ. And 27 observers who were unfamiliar with the London's docks found the river Thames dash. So observers कौन होंगे viewers ਜਿਹੜੇ view ਕਰਦੇ ਨੇ right ਜਿਹੜੇ ਕਿ unfamiliar ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ knowledge ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਲੰਡਨ ਦੇ docks ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ river Thames ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ. Clear Putter? So these all are our questions. Now we are going to start reading A section. So now the answers zero bolonge Putter ji, be active. Okay. So A, in our pioneering survey, pioneering means starting wala है ना मोटी होना. Okay, sources of the London English, Lord Wright has listed the variety of the medieval workers who took their lives livings from the river Thames. So in a variety of medieval workers is all about the different workers ਜਿਹੜੇ ਕਿ show ਕਰਦੇ ਨੇ. variety means ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ different occupations ਨੂੰ show ਕਰਦੇ ਨੇ right. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ various of the queen had this acted as the customs officers. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ officers custom officers हो गए. There were conservators who were responsible for maintaining the embankments and the weirs, and there were the girth men who worked in the fish girth and closers right. So number 1 हैगा जी custom officers हो गए, number 2 हैगा conservators हो गए, number 3 हैगा girth man. अगली गल कीती है gallery man दी, next गल कीती है lighterman ते shoutman दी, called after the names of their boats. And there were hookers who were named after the manner in which they caught their fish. The searcher patrolled the Thames in search of the illegal fish weirs, and the tide man worked on its banks and the foreshores whenever the tide permitted him to do so. So that is all about the variety of occupations they are talking about here. Number 1, Sigaji custom officers. I am going to highlight these ones. Number 2, Sigaji conservators. Sige. So 3 सीगा जी गर्थमैन सीगे, and 4 सीगा गैलरी मैन, 5 सीगा लाइटर मैन, 6 सीगा शाउट मैन, 7 सीगा हुकर्स, 8 सीगा सर्च पेट्रोल. ओके, नेक्स्ट सीगा टाइड मैन. सो इथे इन्होंने क्लियरली दस्सिया कि डिफरेंट लोग सीगे ते डिफरेंट उन्होंने ऑक्यूपेशन सीगा. क्लियर पुत्र जी? सो दैट रिप्रेजेंट द ड्यूटीज इन्वॉल्वड इन वेरियस ऑक्यूपेशंस. क्लियर हो गया बेटा? सो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है जी 15 का दसो की आएगा. दैट विल बी क्लियरली 3 पुत्र जी. डिफरेंट ड्यूटीज सीगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵॉल्व ਸੀਗੀਆਂ वेरियस ऑक्यूपेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ. सो आंसर ऑफ A will be certainly 3. आई होप इट्स क्लियर बेटा. समझ आ रही है? यस और नो जरूर बोलिया करो प्लीज. बी एक्टिव. चलो आगे चलते हैं. B, all of these occupations persisted for many centuries. So बहुत सारी centuries तक ये जो occupations दिए हैं ना, variety of occupations दिए वो इधर चलते रहे. As with those jobs that depended upon the trade of the river, yet it was not easy work for any of the workers. कहने but उस टाइम पे जो काम करना सीखा workers लिए वो easy नहीं होता सीखा. They carried most goods upon their backs, since the rough surface of the quays and nearby streets were not suitable for the wagons or large cars. So इन्होंने बोला है कि ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ like workers ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ like ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ because ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ quays ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੱਡੇ ਹੋਣੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ streets ਚੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ wagons ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ large cars ਦਾ ਚੱਲਣਾ like ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਹੀ like transport ਕਰਦੇ ਸੀ heavy load ਨੂੰ. ठीक है. The merchandise characteristically arrived in the barrels which could be rolled from the ship along each quay. If the burden was too great to be carried by a single man, कि अगर like burden बहुत ही ज़्यादा होता सीगा कि single man उन्हें नहीं carry कर सकता सीगा, then the goods were slung on the poles resting on the shoulders of the two men. तो दो जाने like उन्हें क्या करते सी pole ले लेते सीगे, एक side तो एक जना पकड़ता सीगा, second side तो दूसरा जना पकड़ता सीगा, तो फिर दो जाने like उन्हें carry करके उन्हें transport करते सीगे. Clear पुत्र जी? That has been mentioned here. So इतो अपन आंसर मिलना पे पुत्र बिजली like लोग सीगे वो मैनुअली ही काम करते सीगे ज़्यादातर. इधर गल की थी ये ना? Yes, very good. So इधर अकॉर्डिंग आंसर दसूंगे बेटा जी क्या आएगा? Answer will be certainly 6, transporting heavy loads manually. Manually का मतलब क्या है कि लोग खुद ही करते सीगे उस टाइम पे जो ज़्यादातर vehicles सीगे उन्होंने यूज़ नहीं किया जाता सीगा. So the reason किसी का क्यों नहीं यूज़ किया जाता सीगा? Because streets ने जो ना surface वही नहीं होता सीगा रफ सीगा and secondly खड्डे होते सीगे जिसे करके wagons या cars का उसे चलना मुश्किल होता सीगा. That was the reason. Clear पुत्र जी? Any doubt? Clear. चलो आगे चलते हैं.
however up to 18th century ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 18th century ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ that means ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ B ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 18th century ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ मेरी गल समझ आ रही है ना सो इथों आपां नूं दो होर क्वेश्चन का आंसर मिलता पे पुत्र जी क्वेश्चन नंबर 21 ते 22 आ देखो ये बोलिया सी ना बिफोर 18th सेंचुरी ओथे गल हुई आफ्टर 18th दी सी तो बाद तो दैट मींस ए दे बी दे विच जेडी गल हुई है ओ टू जिहड़ियां स्टेटमेंट्स जो ट्रू होणगियां चलो चेक करदे हां जी हुण मैनूं दसोगे 21 ते 22 दा आंसर तुहाडे अकॉर्डिंग की आएगा ए टू ई दे विच कम ऑन गुड्स ਨੂੰ ट्रांसपोर्ट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗਾ ਸਵਿਚ ਦਾ ਉਹ ਰਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਏਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੋ ਬੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪੂਰਲੀ ਪੇਡ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ऑक्यूपेशन ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਮੀਨਸ ਗਰਟਮੈਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਲਾਈਟਮੈਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਟਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਲਾ ਪਰਸਨ ਆਵਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਵਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ B workers were generally looked down upon that is not given there so answer will be clearly E physical strength was required क्योंकि physical strength की लोड़ होती सी because उन्होंने कहा कि जो heavy like load सी ना वो manually लोग लेके जाते सी जिन्होंने लगता सी बहुत ही ज़्यादा heavy हो गया तो दो जाने उन्होंने पकड़ के लेके जाते होंगे सी तो understood है अगर manually काम करना है heavy load transport करने के लिए then certainly physical strength was required so question number 21 and 22 correct options are C and E I hope Puttaji these two are clear to you. Very good. चलो अगे चलते हैं जी सी सेक्शन में होना 18th century तो बाद की गल की है river work was seen in generally favorable light. So देखिए कि 18th century तक जो river work जो लोग काम करते सीगे उन्हें वधिया मन्निया जाता सीगा favorable light दे विच सीगा for land right in the 14th century laborers working on the river merchandise were relatively prosperous. So it like 14th century में 24 नंबर लिखा गया तो उसे क्लियर किया गया कि जो ये laborers का मतलब क्या वर्कर्स जो काम करते सी रिवर साइड पे like वो कहते जो व्यापारी सी ना बहुत prosperous मींस खुशहाल होना like बहुत wealthy type सी clear good and the part is of the 17th and early 18th century were if anything aristocrats of labor enjoying the high status they 14th century ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17th ਤੇ 18th अर्ली 18th सेंचुरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ however ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ in the years from the late 18th to the early 19th century ਫਿਰ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ early 19th century ਦੇ ਵਿੱਚ there was a marked change in attitude that means ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ this was in part because working labor was within the region of the east end of London which in this period acquired an enviable reputation by now dockside labor was considered to be the most disreputable and certainly the least desirable form of work ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੇ क्लियर पुत्र जी से तो ये पता चला कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ क्लियर ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ 9 will be there ਪੁੱਤਰ ਜੀ C ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 9 that is the changing status of riverside occupation so answer will be certainly 9 I hope these all questions are clear to you clear पुत्तर चलिए आगे चलो उस बाद आप पढ़ते हैं जी डी सेक्शन इट कुड बी सेड दैट इधर क्या जा सकता है the first industrial community in England grew up around the river or Thames River with the host of the river workers themselves as well as a vast assembly of ancillary trades such as tavern keepers pub keepers ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ pubs ਦੇ ਵਿੱਚ keepers ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ sorry clear yes and laundresses ਜਿਹੜੇ laundry ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ food sellers ਹੋ ਗਏ street hawkers ਹੋ ਗਏ
ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਹੋ ਗਏ ਮੈਰਿੰਗ ਸਟੋਰ ਡੀਲਰਸ ਹੋ ਗਏ देयर वाज अ workforce of many thousands congregated in a relatively small area so ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ there were more varieties of the business to be observed by the riverside than in any other part of the city so like ਪੂਰੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ occupation ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ like near riverside ਵਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ as a result ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ with the possible exception of the area known as 7 Dials the east end was also the most intensively inhabited region of London ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ particular area ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ population ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ population ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ means ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ unprecedented population ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ yes ਇੱਕ particular area ਦੇ ਵਿੱਚ exactly so according to that answer ki banna hai doston ki putra ji that is unprecedented population density yes clearly answer will be 4 unprecedented means never known ki like ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ clear unprecedented got it ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ next E section ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ इथों लाइक जो क्वेश्चन नंबर 23-24 ਸੀਗਾ अर्ली 19th सेंचुरी ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ बढ़ते हैं E section it was a world apart with its own language and its own laws देखो लाइन नंबर 1 तो क्लियर हो रही है कि वो एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ yes so ये बोले it was a world apart मतलब उन्होंने जो वर्ड सीगा ना कुछ अलग ही सीगा उन्होंने अपनी लैंग्वेज सीगी अपने रूल सीगे लॉ सीगे कानून सीगे from the sailors in the opium dens of the Limehouse to the smugglers on the malarial flats of the estuary the workers of the river were not part of any civilized society so ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ civilized society ਦਾ part ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ align world ਸੀਗਾ align world ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ of the river had entered them That alienation was also expressed in the slang of the dogs, which essentially amounted to the back slang. Another language we already see are the reversal of the ordinary words. Okay, this back slang also having the formulation of the customary rhyming slang, so that the vocabulary of the Londoners was directly affected by the life of the Thames. So that is all the exclusive identity Putraji, having their own language, having their own rules or laws. So according to that answer will be certainly Putraji 2. That is the creation of an exclusive identity, different identity. So question number 19 that is E answer will be certainly Putraji 2. I hope it's clear beta. Very good. चलो आगे चलते हैं जी F section में very interesting ना yeah चलोगे उसके बाद बोलिया है the reporters in the 19th century perceived a heterogeneous world of the dock labor homogeneous on the same heterogeneous on the different in which the crowds of the casuals waiting for the work at the dock gate at 7:45 a.m. included the penniless refugees bankrupts old soldiers broke down the gentlemen okay discharged servants and ex-convicts actually it's in story this year okay like morning ਦੇ ਵਿੱਚ 7:45 am ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ penniless ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ refugees ਹੋ ਗਏ bankrupts ਹੋ ਗਏ old soldiers ਹੋ ਗਏ gentlemen ਹੋ ਗਏ broken down ਹਨਾ discharged servants ਹੋ ਗਏ like ex-convicts ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ casual work ਦੇ ਲਈ like ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਦਊਗਾ ਹਨਾ ਲੇਬਰ ਦਊਗਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ there were some 400 to 500 permanent workers who are the regular wages इन्हें बोलिया भी सिर्फ ते सिर्फ 400 to 500 like permanent workers होंगे सीगे बाकी सारे ही होंगे सी casual workers अगर इतना and who were considered to be the patricians of the dockside labor however there were some 2500 casual workers who were hired by the shift so by shift का मतलब कि temporary work ज़्यादा लोग की सीगे उस टाइम पे temporary work करते सीगे क्योंकि लेकिन एक comparison की तरह 400 to 500 सीगे permanent workers ते बाकी like around 2500 सीगे temporary workers. The work for which they competed fiercely had become ever more unpleasant. Okay. Steam power could not be used for the cranes. when the crane अपन को एक और synonym मिल गया है, not synonym keyword मिल गया है. आगे बढ़ाएंगे. For example, because of the dangers of fire, okay, so the cranes were powered by the treadmills. 6 to 8 men entered a wooden cylinder and laying hold of the ropes would thread the wheel round. They could lift nearly 20 tons to an average height of 27 feet, 8.2 meters,
40 times in an hour. This was part of the life of the river unknown to those who were intent upon its more picturesque aspect. इतो अपन काफी क्वेश्चंस आंसर मिलता है। सब तो पहले चलो हेडिंग का सुबह तरीके किया है। हेडिंग क्या है ना? विज़ार लोग टेम्परेरी वर्क कर दे सीगे। So answer will be certainly उत्तर जी 7 clearly लिखा है। Temporary work for large numbers of people. There will be 7 exactly. So ये नाल अपन फिलिप्स से चले सारी थोड़ी मिलेंगी। 25 ये बोला सीगा 19th century के बेच Only minorities to dock workers received a dash. बहुत कट लोग सीगे जिन्होंने की मिलती सी। देखो मैं हालत कितना सीधा पुत्र सी लाइन नंबर 3 तो पढ़ोगे there were some मतलब कुछ मतलब बहुत कट निकाला होती थी 400 to 500 permanent workers who earned a regular wage. Exactly बहुत कट लोग सीगे जिन्होंने regular wage मिलती सी. Exactly. So according to that answer will be regular wage. Yes. Clear पुत्र जी. Next 26 cranes were operated manually because dash created a risk of fire. So manually operate कितना जाना सीखा क्योंकि केड़ी चीज़ सीखी जड़े के like risk सी. Exactly. So चलो check कर दे पुत्र जी केड़ी चीज़ risk सीखी already we have read in the last paragraph from here. 2 lines पढ़ के मैंने answer दोस्तों किया है 3 lines. Come on. Tell me answer of question number 26. Regular wage yes पुत्र जी. So answer will be steam power क्योंकि नहीं दिखता ना क्यों यूज़ नहीं कितना ज़्यादा सीधा क्रेन्स दे विच क्यों यूज़ नहीं कितना ज़्यादा सीधा नहीं कितना because of the danger of fire तो किसी चीज़ में यूज़ नहीं कितना ज़्यादा सीधा पुत्र जी that is steam power. And 27 observers who were unfamiliar with the London docks found the river Thames dash. So उन्होंने की सीधा river Thames. Last line तो पढ़ेंगे second last line here we have answer of this question. So this was part of the life of the river unknown to those means unfamiliar people the Galundipian who were intent upon its more picturesque aspect. So answer will be picturesque, more fascinating. So answer will be fascinating, that is a picturesque. Clear? So now we are left with 2 questions. Question number 23 and 24. फटाफट आंसर दोस्तों पुत्र जी किया है 23 से 24 दा. Come on, be fast. 23 से चलते हैं. इन्हीं क्या सीधा early 19th century. Come on, आप पढ़ चुके हैं already. तुसी एक बिना दोबारा चेक किए मेरे आंसर दस सकते हो. Come on, be fast. I'm waiting. So early 19th century का C section तो शुरू हुई है. मैं तो क्लियर कर देनी है. उसके बाद 19th century गल होती भी है. सब तो मेरा C section तुम पढ़ोगे. हाँ जी. C section तो शुरू हुई है ना. उसके बाद इतने भी 19 की गल होती भी है. तो इतने में बोला सीगा कि इसका पर्टिकुलर एरिया सीगा बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया सीगा. पॉपुलेशन जेडी सीगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई सीगी. क्लियर पुत्र जी? Yes, so इधर अकॉर्डिंग आंसर टाइप करके दसोगे. तो लास्ट में जब पढ़िया सीगा कि कैजुअल वर्क ज़्यादा लोग करते सी टेम्परेरी वर्क ज़्यादा डिमांड दे सीगा. So the area was overcrowded. बिल्कुल सही है. Early 19th century ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ overcrowded ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. क्राइम ही सीगा इधगालिंग की कैजुअल वर्क ग्रेट डिमांड दे विच सीगा. यस क्योंकि लाइक ज़्यादा लोग सीगे जोड़े के कैजुअल वर्क ही करते सीगे टेम्परेरी वर्क ही करते सीगे. राइट. सो सेवरल लैंग्वेजेस में यूज नहीं किया जाता सीगा. एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी सीगी उन्हां दी ते आ फ्रेंडलीनेस सीगी नहीं सीगी दैट इज नॉट गिवन एनीवेयर. क्लियर पुत्र जी? सो आंसर विल बी बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. आंसर विल बी A and C. So A जो आंसर है that is given in D section with last 2 lines and F with the line number 3 and 4. Got it? So that's all about today's reading passage and I hope it's clear to everybody. So don't forget to like my video. Do share and comment too. Bye bye. Have a nice time. Thank you so much. God bless you all. Bye bye.